Greetings, everyone. Good morning. I hope you are well and had a good night's sleep. My name is Chandra. It's nice to be here with you for a second day. I have Sweety here, who is a first-time translator, doing a great job. Not an easy job, so thank you, Sweety. And we're trying to make improvements for today and tomorrow. So hopefully you'll find this class understandable. Sweety, are you here? Do you want to? Yes. Good morning. Yeah. Do you want to say anything to the group? Good morning, everyone. हम try करेंगे जितना हो सके उतना translate हिंदी में आपको करके देंगे. We'll try our best. Thank you. Yeah. My teacher says, let go and let Tara. I don't know if that's easy to translate, but the quality is like, let go of control and getting it perfect, and let Tara take care of you. So we're going to do that today a bit. Does that make sense? I can't see you, Sweety. Are you? Yeah, I'm here. Okay, good. Hi. 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 Yeah, I've translated a lot, and I know it's very difficult. So we're mainly going to practice today. But before we practice, I'm just going to share a little bit of teachings and then explain the positions and the mudras before we do the practice. आज हम साधना प्रैक्टिस एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस वापस करेंगे. प्रैक्टिस करने से पहले मुद्रास जो पोजीशंस हैं उनको पहले सीख लेंगे. There is another creation story or creation myth for Tara, and we thought to share it with you today. आज हम एक और कहानी के बारे में बताएंगे जो बहुत ही फेमस है. So she's going to say about the story. एक कहानी बताएंगे about देवी तारा. So Tara, or Drolma in Tibetan, is the Buddhist savioress, and she has many forms, and she's widely popular in Nepal, Tibet, and Mongolia. Do you want me to keep going? I'll read the whole paragraph. Yeah. Okay. She is the feminine counterpart of the Bodhisattva, or the Buddha to be, the future Buddha, Avalokiteshvara. And according to popular belief, she came into existence from a tear of Avalokiteshvara, the male Buddha of compassion, which fell to the ground and formed a lake. Out of its waters rose up a lotus, which on opening revealed the goddess Tārā. Like Avalokiteshvara, she is compassionate. She is a compassionate deity. She helps people cross to the other shore, Tārā. She is the protectress of navigation and earthly travel, as well as of spiritual travel along the path to enlightenment. अभी देवी तारा के बारे में जो लोकप्रिय कहानी है उसके बारे में जानेंगे. देवी तारा, जिनका तिब्बती नाम है संग्रोल माँ, बुद्ध धर्म में उद्धारकर्ता देवी. इनके कई रूप हैं. ये देवी माँ नेपाल, तिब्बत और मंगोलिया में व्यापक रूप से लोकप्रिय है. यह देवी अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की स्त्री प्रतिरूप है. लोकप्रिय मान्यता के अनुसार वह अवलोकितेश्वर के एक आंसू से अस्तित्व में आई, जो जमीन पर गिरते हुए ही एक पानी की झील बन गई. इसी झील के जल से एक कमल निकला, जिसके खुलने पर देवी प्रकट हुई. अवलोकितेश्वर की तरह यह देवी भी दयालु है और सहायता करने वाली देवी है,
जो मनुष्य को दूसरे किनारे पर जाने में मदद करती है। यानी हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों, जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उन्हें पार करने में मदद करती है। वह नौवन और सांसारिक यात्रा की रक्षक है, साथ ही साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर आध्यात्मिक यात्रा भी करती है। थैंक यू। And so now we're going to learn more about the Dharma Chakra that is the symbol on her lotus flower. It symbolizes the Eightfold Noble Path. अभी हम अष्टमुखी धर्म चक्र के बारे में जानकारी लेंगे, जो एटफोल्ड नोबल पाथ के बारे में है। यह अष्टमुखी धर्म चक्र देवी तारा ने लेफ्ट हैंड पे उनके जो कमल का फूल जो पकड़ा हुआ है उसके ऊपर है, तो उनके बारे में ये जानकारी लेंगे। So here you see the Dharma Chakra. It has 8 spokes. ये आप देख सकते हो, ये अष्टमुखी धर्म चक्र, ये धर्म चक्र की 8 तीलियां है। The 8 spokes represent the Eightfold Noble Path, which are the 8 practices that the Buddha taught to become awakened in this lifetime. Earlier teachings say that like more of the early teachings of the Theravada tradition say that in order to become a Buddha, we need many, many lifetimes. But in Tantric Buddhism, they say just one lifetime if you practice really well. बेसिकली बुद्ध धर्म में ये माना जाता है कि अगर हमने ये 8-fold पाथ जो अभी सीखेंगे वो अगर उसका प्रैक्टिस किया तो हमें रिपीटेड लाइफ नहीं लेना पड़ेगा. One life is more than enough. I hope that was correct. Yes, and the thing that is different about Tantra, Sweety, I want them to understand, because we're all women here, is that in Tantric Buddhism, Vajrayana Buddhism, women are at the same heavy quality with men. That women can attain enlightenment in a female body. Basically, वो बोल रहे हैं कि बुद्ध धर्म में जैसे men जो है, आदमी जो है, मनुष्य, पुरुष जो है, जैसे उनको एनलाइटमेंट मिलती है, वैसे ही एक फीमेल, एक औरत को भी एनलाइटमेंट मिल सकती है in the female body. And yesterday, you may recall the other creation myth, the other story of Tata, where she made the vow, the promise, the commitment to become a Buddha in a woman's body. कल जो हमने कहानी सुनी थी उसमें एक प्रिंसेस के बारे में जो थी, उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया एक फीमेल के बॉडी में. For me, this is very important because I'm in a woman's body this time, and the tantric teachings feel like a better home for me than teachings that tell me that if I'm a woman, I can't do what I want to do. You see? मैं खुद एक औरत हूँ एंड इस बुद्ध धर्म के लिए मेरे को महत्वपूर्ण है, मतलब मेरे लिए बहुत महत्व है मेरे जीवन में. How does that feel for you, everyone? I'm asking you all. How does that feel? I can't see people very well, but is that important to you in this lifetime where we have a woman's body? Maybe I can see your faces. Yeah, I see some people nodding. Thumbs up. Thumbs up. If all the Buddhas are always men, then we don't see ourselves in divinity, right?
The Hindu Tantra has many female deities, so very good. Okay. So back to the Eightfold Noble Path. Okay. So the first, so I'm going to tell you each of the Eightfold, okay? So the Eightfold Path is the path we walk on to reach enlightenment. The first is right view or correct view. And that means seeing the world in accordance with reality. अभी हम एटफोल्ड पाथ के बारे में जानेंगे। वो एक सत्य और धार्मिकता का प्रतीक है। सबसे पहला जो फोल्ड है वो है राइट व्यू, यानी सही दृश्य। जिस तरह से चीजें वास्तविकता में है उसकी सटीक समझ होना, यानी सही दृश्य। The second is right intention, which is what I mentioned yesterday about mantra japa recitation. If your intention is good, then the result will be good. So what is your intention? जो दूसरा पथ है वो है राइट इंटेंशन, यानी सही इरादा। कोई भी कर्तव्य या कार्य करने के पीछे हमारा क्या इरादा है, क्या संकल्प है, यानी सही इरादा। The most important intention is to have compassion, or the intention of Bodhichitta, that vow we talked about yesterday, which is the desire to help others, to be of service, seva. Yeah, that intention. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अंदर कंपैशन होना, यानी करुणा होना, और बुद्धिचित्ता का महत्वपूर्ण रहना, यानी हमें दूसरों को मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। The third is right speech. So speaking with kind words, not harmful words. जो तीसरा पद है वो है राइट स्पीच, यानी सही भाषण, सही उच्चारण करना, झूठ नहीं बोलना। And being honest, not lying. Yes. Common sense. Yes. Okay. The fourth is right conduct, meaning right actions. Just like speech, our actions have karma, right? So we try to be compassionate, gentle, patient. जो फोर्थ पाथ है वो है राइट एक्शन, यानी सही काम, क्रिया या कार्रवाई करना, चोरी, कदाचार, इससे बचना। The fifth is right livelihood, which is working in the world in a way that does not cause harm, that doesn't hurt beings. So, being in a business that takes advantage of people. Does that make sense, Sweety? Or killing animals, that's another thing. Yeah. जो पांचवा पद है वो है राइट लाइवलीहुड, यानी सही आजीविका। हमारे आजीविका में हम कुछ भी कार्य या कर्तव्य करते हैं उसे दूसरों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार करते हैं तो किसी को धोखा नहीं देना, या किसी अपने कोई भी कार्य से किसी को दुख पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, वो नहीं करना है, यानी सही आजीविका। The sixth is right effort, which is to exert yourself or to make an effort in your life, in your spiritual practice, that is not lazy, to exert effort, make an effort. जो सिक्स्थ पाथ है वो है राइट एफर्ट्स, यानी सही प्रयास। हमें सकारात्मक पॉजिटिव एफर्ट्स करते रहना है, सकारात्मक प्रयास जारी रखना है हमारे जीवन में on continuous basis. Also to have an effort, an enthusiastic effort, do you know that word? Or with joy, practice the Dharma, practice spiritual life with joy,
with enthusiasm. हमें ये जो धर्म बुद्ध धर्म है वो हमें ये एनीवेज इन रोज के जीवन में हमें सही प्रयास करते रहना है, खुशी से करते रहना है. The seventh is called right mindfulness. Mindfulness, I know in Sanskrit it's smrti or smrti, right? To remember. It's to remember to be present in the moment with other people, with your breath, with your meditation. This is right mindfulness. जो सातवां पद है, seventh, it is mindfulness. We can also call it as सचेतन. यानी हम जब ब्रीदिंग करते हैं, हम अपना जीवन गुजारते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो सचेत रहना, mindfulness. Many of us are busy and distracted and moving too quickly. The practice of Dharma is to slow down and be present with whatever you're doing in the moment. हम जीवन में बहुत बिजी रहते हैं, we are doing too many things, बहुत सारा काम एक साथ करते हैं. So बुद्ध धर्म में बोला गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, सचेत रहिए. And then the last one, the eighth one, is called right samadhi, or right meditative absorption. And that is to meditate in a way that is focused, relaxed, clear. जो आठवां पद है वह है राइट समाधि, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, यानी सही एकाग्रता. And so today, in a few minutes, we will practice perhaps the last two, number 7 and number 8, right? Right mindfulness and right meditation. आज हम 7th and 8th पद को प्रैक्टिस करेंगे, यानी संचेतन के बारे में और सही एकाग्रता. But of course, it's nice to have the other ones, right? The first, the second, intention with the heart, with compassion, and so on. So they're all interconnected. They're not separate. इसी के साथ जो बाकी 6 पाथ है, सही दृश्य, सही इरादा, सही भाषण, सही काम, सही आजीविका, सही प्रयास, ये सब भी इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Okay, so that concludes the path of the Eightfold Noble Path, the teachings of Buddha Siddhartha Gautama. And now I want to explain a bit about the practice itself, the position of the body, and the mudras. Oh, sorry, the screen is still shared. Okay. So first I thought we'd go over the ninefold breath again together. We'll do it. And then I'll show the mudra for the Tara practice also. अभी हम 9 सांसों की शुद्धिकरण के बारे में जो हमने कल किया था वो आज वापस प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद 3 रत्न मुद्रा के बारे में भी जानकारी लेंगे. So if you can take a Padmasana or Vajrasana is the lotus posture, then please take that. But if you can't, it's no problem. You can just do a regular cross-legged position, like this. Or if you're sitting in a chair, that's okay too. But if you can take Padmasana, do it carefully and take one foot slowly and then the other foot slowly. Be very gentle with your knees.
अपने सुविधा के हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं। अगर पद्मासन हो सके तो पद्मासन पोजीशन में बैठ जाए, अगर पॉसिबल नहीं है शारीरिक के अनुसार आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं या अपने लेग्स को क्रॉस भी कर सकते हैं। Okay, so you can do this with me. Do it together. Okay, so begin by taking some mindful breaths into the belly. Relax tension. सचेत सांस अंदर लेना है और एक्सेल करना है। And then bring into your mind the imagination, seeing and feeling the central channel, the sky blue color that starts at the base of the spine and travels all the way up and blooms like a lotus in the crown of the head. साथ ही हमें कल्पना करनी है आसमानी नीले रंग का सेंट्रल चैनल जो रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर जाता है और वह क्राउन चक्र में 1000 लोटस पेटल्स की तरह वो विकसित होता है, यानी वहां पे वो टर्मिनेट होता है। The central channel is about the width of your thumb. सेंट्रल चैनल की चौड़ाई एक अंगूठे जैसी, अपने अंगूठे की तरह है। And the two side channels leave the central channel at just about 4 finger widths below your belly button, your navel. Right about there, the side channels leave the central channel and then they run up along the central channel, up around the inner head and terminate or end at the nose. जो 2 साइड चैनल्स है वह अपने बेली बटन के 4 उंगली के नीचे से वो 4 उंगली के नीचे से वो सेंट्रल चैनल को छोड़ते हुए ही ऊपर सेंट्रल चैनल से पैरेलल रन होता है और वह हमारे क्राउन चक्र से आके हमारे नॉस्ट्रिल यानी नासिका में टर्मिनेट होते हैं, दोनों लेफ्ट एंड राइट। And they're the width of your pinky. Yes. और उनका जो सर्कमफ्रेंस है, उनकी जो चौड़ाई है वह हमारे छोटे उंगली जितनी है। The right is a ruby red, a deep red color, and the left is a very clear white color. जो हमारा राइट साइड चैनल है उसका रंग है हरा गहरा लाल कलर, डीप रेड कलर, और जो हमारा लेफ्ट चैनल है उसका रंग है सफेद, white. When we are out of balance, when we are toxic, the central channel manifests as ignorance, right? Marikpa is ignorance. And then the right channel, the red one, manifests the emotion of desire or craving. The left channel manifests the emotion of hatred, anger. जो हमारा central, can you just repeat it again? The central channel? Yeah, these are the 3 poisons, right? The 3 poisons. So the central channel is ignorance. Yes. Okay. Yes. जो central channel में अगर imbalances आ जाती है, यानी असंतुलन आ जाती है, तो उसमें अज्ञानता भर जाती है, तो वो अज्ञानता हो जाते। जो left channel है उसमें बहुत सारा हमारे इमोशंस रहते हैं, जैसे इमोशंस रहते हैं ऑफ लालसा, क्रेविंग, एंड जो हमारा लेफ्ट चैनल इज फॉर No, right channel is desire, craving. राइट, जो हमारा राइट चैनल है
Yeah, right. हमारा राइट चैनल है उसमें हमारे इमोशंस रहते हैं. जो हमारा लेफ्ट चैनल है उसमें क्रोध, आक्रमकता, घृणा उसका प्रतीक है. Okay. Can you read that? So that's because that's an error. So can we read with the central, left and right? Central is ignorance. जो सेंट्रल चैनल है उसमें असंतुलन यानी इम्बैलेंस होने से उसमें बहुत सारा टॉक्सिक पैदा हो जाता है एंड वो अज्ञान का प्रतीक है. Right channel is red and that's associated with desire. जो राइट चैनल है वो एसोसिएटेड है हमारे इमोशंस से. जो इमोशंस है Craving is good. हाँ, क्रेविंग, लालसा, इच्छा, जो उसका गहरा लाल कलर है. Left channel, white, associated with the emotion of hatred. जो लेफ्ट चैनल है जो सफेद रंग का है इज एसोसिएटेड विद घृणा, आक्रमकता, क्रोध. Krodh. Yes. So with the breathing, we purify those three poisons. So जो ये इम्बैलेंस हुए, जो असंतुलन हुए हैं, हम ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस से उसको बैलेंस करेंगे और ये इमोशंस को एमिट करेंगे यानी बाहर निकालेंगे. And we remember the earth cracks open beneath us and Lord of Death Yama is down there hungry. He wants to come and get us and we feed him to complete satisfaction. हमें साथ ही ये कल्पना करनी है कि हमारे प्रैक्टिस के साथ पृथ्वी खुल जाती है और यमराज जी या जो कर्मरनी हैं उनको हम याद करते हुए जैसे ये सांस एग्जिट करते हैं यानी बाहर एक्सेल करते हैं, ये हम उनके लिए एक अमृत बन जाती है और उन्हें शांत कर देती है. Also, all of our karmic debt holders, people animals, beings we have karmic debt with, are down there hungry, hungry, hungry. So with the expulsion of the breath, we feed them nectar, amrita, that makes them very happy and content. So जब हम एक्सेल करते हैं इसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ हमें कल्पना एडिशनल यानी और एडिशनल विजुअलाइजेशन करना है कि मृत्यु के भगवान जो यमराज जी है और हमारे कर्मरनियों हैं उनको याद करते हुए जैसे ही एक्सेल करते हैं सांस वो अमृत बन जाती है और ये अमृत बनते ही वो एकदम शांत हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं. Okay, so let's do it. So we start with the hands on the thighs, palms down. अपने हाथों को अपने जांघों पे रख दे. And with your next inhalation, raise the arms overhead. सांस को अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर लीजिए. Exhale, descend down, make your Vajra fist. सांस बाहर लेते हुए हाथों को नीचे लीजिए और वज्रा फिस्ट की मुद्रा में जाएंगे. Here we need a clarification. The thumb is below the ring finger or below the pinky finger? Below at the root of the ring finger. This is said to be a channel that negativities can come into the body. So we block it. Yes. We block it and then we close. ये जो हमारा अंगूठा है वज्रा फिस्ट बनाने के लिए यानी नरम मुट्ठी बनाने के लिए ये अंगूठे को रिंग फिंगर के नीचे रख दीजिए. वो ब्लॉक करता है हमारे नेगेटिव इमोशंस को ब्लॉक करता है. And then the index and the pinky finger, these two fingers are a little looser. Okay. So not like that, like that. Okay. And then you place this part of the hand here, the back of the hand, down at the crack of the hips, right here at the hips. जैसे ही ये वज्रा फिस्ट बन जाता है, ये जो दो उंगलियां वैसे लूज रखनी है, पूरा बंद नहीं करना है. रखने के बाद ये हमारे जो हाथों के पिछला भाग है वो अंदर रख देना है हमारे जांघों के बीच में दोनों और जितना हो सके उतना एल्बोस को स्ट्रेट करना है.
If you can do elbows straight, do elbows straight. If not, you can bend the elbows. That's okay. No problem. अपनी शारीरिक सुविधा के अनुसार अगर ना हो सके एल्बोज बेंड तो सॉरी स्ट्रेट नहीं हो सकते तो बेंड भी रख सकते हैं. Or you can straighten the elbows and have the hands more near the knees. अगर आपको जांघों पे नहीं जम रहा है अपने हाथों को रखने के लिए तो अपने घुटने पे भी रख सकते हैं. So let's do that again. हम ये वापस करेंगे. When you're ready, inhale. सांस को अंदर ले, हाथों को ऊपर ले. Exhale, Vajra fist. सांस को बाहर एक्सहेल करते हुए वज्रा फिस्ट बनाए. और Place on hips. जांघों पे दोनों हाथों को रख दे. एल्बोस को जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखे. The shoulders come up near the ears. It's okay. And then have the chest be open. Chest open. जो हमारे शोल्डर्स है वो कान के वहां आएंगे तो चलेगा और चेस्ट ओपन कीजिए. छाती को ओपन कीजिए. Feel your spine nice and tall through the crown of the head, lifting up to heaven. अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए. Good. Let's do it again. One more time. Inhale. सांस को अंदर लेते हुए हाथ ऊपर. Exhale. सांस को बाहर लेते हुए हाथ नीचे. वज्रा फिस्ट. Now the next part. Inhale, left arm out to the side. Bend the elbow. Circle. Place. Breathe out. Exhale. अभी सांस को अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए. ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको ऐसे गोल आकार में घुमाते हुए हमारी लेफ्ट नासिका यानी बाईं नासिका पे रख दे. और हमारी राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर ले यानी एक्सहेल. यहाँ से एक्सहेल. And so, Sweety, put your palm forward. Yeah, forward palm. See, it's forward like this. Yes. There you go. Elbow is parallel to the floor. So not too high. Yes. Not too low. Parallel to the floor. Yeah, good. तो ये वज्रा फिस्ट यानी पाम को सामने की ओर रखना है और ये हाथ को स्ट्रेट रखना है, पैरेलल रखना है. And when you breathe out the right nostril, you imagine it's a dark, smoky red color that leaves the body and turns into nectar that feeds the beings in the earth. जैसे हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं, हमें इमेजिन करना है गहरा लाल रंग. और जैसे ये लाल रंग में इमेजिन कल्पना करते हैं, वह अमृत बनते ही हमारे कर्मरणियों और यमराज जी को के लिए हम उनको प्रदान करते हैं. Okay, so let's come back here with your inhale, left arm up, circle, place, exhale. And release back to the hip. Inhale, right arm. Same thing. अभी राइट हैंड को ऊपर उठाए, वैसे ही करना है. इंडेक्स फिंगर को उंगली को गोल घुमा के अपनी राइट नॉस्ट्रिल यानी दाहिनी नासिका पे रख दे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें. And it's a dark, smoky white color. अभी जब यहाँ से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे तो ये व्हाइट कलर इमेजिन करना है, सफेद रंग का इमेजिनेशन करना है. And down again, inhale. Circle, place, exhale. Now it's a little clearer. अभी जब लाल रंग को इमेजिन करेंगे वो थोड़ा सा स्पष्ट है. Inhale. You can imagine rainbow light filling your body as you breathe in. जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, हम ज्ञान प्रकाश और इंद्रधनुषी प्रकाश अंदर जा रहे हैं, वैसे हम कल्पना कर सकते हैं.
अभी सांस छोड़नी है थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल और रंग हल्का सा सफेद रंग जो है वो हल्का सा क्लियर और हल्का सा दीप्तिमान है. Last time to the left. You inhale as you lift the arm, exhale through the right nostril. Completely cleansing that nostril, ruby red color. अभी जब हमने तीसरी बार ये प्रोसेस किया है तो अभी तीसरी बार हमें राइट नॉस्ट्रिल से जैसे एक्सेल करते हैं हमें इमेजिन करना है कि जो गहरा डीप रेड कलर था वो एकदम ही क्लियर हो गया, इल्यूमिनस हो गया, प्रकाशित दीप्तिमान हुआ. Right side, inhale, exhale. जैसे हम अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हैं वैसे ही हमारा जो सफेद रंग है एकदम क्लियर हो गया है. Completely clear. Good. And then down. Now we do our 3-part central channel. Inhale. अभी हम 3 भाग वाली श्वास प्रैक्टिस करेंगे. Parts. A third, a third, a third. Completely empty, clear blue central channel. और जब एक्सेल करते हैं हमें 3 भाग में एक्सेल करना है. 1 2 3. Okay, then inhale, exhale, relax. सांस को अंदर ले, सांस को बाहर ले और विश्राम करें. रिलैक्स. So we'll do it again, but with less talking. We're just going to breathe together so we can do it at a nice pace, not too slow. अभी हम वापस करेंगे और थोड़ा फास्टर पेस में करेंगे क्योंकि अभी हमने सीख लिया है. And inhale. सांस को अंदर ले, हाथ को ऊपर ले. Exhale. वज्रा फिस्ट बनाते हुए सांस को बाहर ले, अपनी जांघों पे हाथों को रखें. Inhale, left side. लेफ्ट हैंड को ऊपर ले, इंडेक्स उंगली को गोल आकार में घुमाकर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रख दे. It's just one circle. एक ही सर्कल गोल घुमाना है. Breathing out and release. राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करे, गहरा डीप ब्रेथ. Circle. Place. Exhale. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करे. Release. Inhale, left side. Exhale. Release. Watch my hand. Inhale. Only circle at the end. Place. Exhale. Good. Release. Inhale. Circle now, right then. That's it. Exhale. Completely cleansed. Release. Inhale. One circle. Place. Exhale. Release. Now inhale. 3-part exhalation. Inhale, release the hands. Exhale, place the palms on the thighs. And relax. Okay, any questions about that?
इस क्रिया के बारे में अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं. प्लीज रेज योर हैंड. Please make your questions short, concise, and I'll try to answer in the same way. My query is, how is the visualization part important in this kriya? Like I'm not able to visualize that I'm feeding the yamas and the debtors and all. So is it really important to feed them? Like, does it have any importance in this kriya? This is taught to be an extra part. So if you want to wait on that, and then when you feel more confident with the other visualization and the movements, then you can reintroduce this if you want. It's not, it's great, it's interesting, and it feels good, but if it feels like too much, you don't have to do it. Is that helpful? Yeah, that helps me. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Again, even if the visualization isn't completely clear, that's okay. The most important thing is to feel it. So feel how the breathing is affecting your body. Okay, who's next? Yes, good morning. बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आई लव यू. मेरे को आप दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं. आप लोग की बात बहुत अच्छी लग रही है. ये जो आप क्रिया कर रहे हैं, कितने बार एक दिन में करना है? She's asking how many times this practice has to be done in a day. Just once, and you just do it once. So we did it many times because we were learning, but just one time. But you can do it whenever you want. You could do it 3 times a day, 5 times a day. It's up to you. Yes. अपने सुविधा के अनुसार हम कितनी बार भी कर सकते हैं. एक बार करना है, बाद में आपको अगर 3 बार करना है, दिन में 5 बार करना है, आप कर सकते हैं. मतलब खाली पेट ऐसा खा के ऐसा कुछ? Yes. Anything, should the stomach be empty or any such instructions? It's nice if the stomach is empty, but it's not like yogasana where you really should be empty, or we're not doing deep uddiyana bandha work, right? So it's okay if you have food in your stomach. अगर खाना खाया हुआ रहेगा और करेंगे तो भी चलेगा, because ये light breathing practice है. Okay, thank you, love you. बहुत अच्छा लगा आप लोग दोनों के लिए. Thank you. I want to say something. I hope it's easy for Sweety to translate. We'll try. Yeah. My teacher, Lama Tsultrim, told a story about this breath. She said that one time she had to give a talk in front of many people. She was very nervous. So she did this practice, and it helped calm her down, and she was able to give her talk. Okay. देवी टीचर चंद्रा ईस्टन के जो गुरु है वो है लामा सुल्त्री. उनको एक महफिल में उनको एक ऑडियंस के सामने एक लेक्चर देना था. तब उनको एंजाइटी था, एक फियर था बिफोर दी गिविंग द लेक्चर. तो उन्होंने ये प्रैक्टिस किया. जब ये 9 ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया बिफोर गिविंग द टॉक टू द ऑडियंस, वो काम हो गए, रिलैक्स हो गए. तो ऐसे ही उनको अपने आजीविका में यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को. ओके, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, भिलाई दुर्ग, छत्तीसगढ़ से. ओके, थैंक यू. थैंक यू. My question is, when we are breathing in, should our tummy part come out or inside? Because a lot of confusion happens, because many people say जब हम सांस लेते हैं तो your tummy should come out. So this is not exactly like a formal yogic breathing. For example, do you do ujjayi breath with the yoga? Yeah. So my teachers say not to actually do the ujjayi where you constrict the throat a little bit to slow that air down. So you're just breathing normally. And so let the breath be natural in the belly and the chest expanding with the in-breath, releasing with the out-breath. Let it be natural. So don't control the stomach or the diaphragm too much. Is that clear? It's just a natural breath, but you're breathing deeper
But we're not doing Ujjayi breath. I'm going to close my blind. It's getting really bright. And what's your second question? And the second question is, we should always start with the left and then the right, like the first. Yeah. Okay. Everybody, I just spilled my water. Everybody starts with the left, always. Men and women, non-binary, transgender. Everybody starts with the left. Okay. My third question is the last one, which we do, the three step. So how is our hands supposed to be? Is it the same posture like how we have? Yeah, they just stay at your hip with the Vajra fist. So they're here. They're just like that. They stay. Okay, thank you so much. I think this we should inform to everyone. This query will be of everyone. जब हम 3 सांस को छोड़ते हैं बाहर लास्ट में, तो हमारे हाथों का जो मुद्रा है वो वज्रा फिस्ट में हमारे थाइस के अंदर ही रहेगा. We take up the next participant. Ma'am, am I audible? Yes, yes. Okay, it's great to have you for this great learning. I had always been a great worshipper of Goddess Tārā, had never been to any workshop, but yes, being a healer or have learned different modalities, so we always invoke green Tārā, red Tārā, white Tārā. And it's a pleasure to have you that we are gaining this experience from you. My question was always, because yesterday, because of the disconnection, I did not get this 3x3 breathing exercise yesterday. So I learned it today only. And I practiced it today for the first time. My question is, like, when we do this position, like when we lock our feet inside the groin area, or maybe just above the, our groin area. Yeah. So do we little press it down? Yeah. Because in order to lock the elbows, we literally need to press it inside. And then the position, like it becomes like more like, I don't know that I just, I could imagine that a chimpanzee kind of, he keeps his hands just like this, and they just walk like this. I'm an animal lover, so I can imagine animals very easily and often. So I could imagine like that kind of a position, like we just press inside into the groin area, and then make the elbows straight. Is this right? Yes. Like we have to press it. Yeah, you press, because it actually, that's in Ayurveda, you might know, this is in the marma system. That is that point at the groin, right at where the thighs meet the hips, is a marma that stimulates the circulation in and out of the legs. So we benefit our body and our circulation by pressing down for a little bit and then releasing, because it helps circulation. So yeah, that's one reason. So you do press and lock, and it will make your wrists a little sore. You might feel a little stretch, but they get used to it. And then at the end you can relax and straighten, But it's also, that is a good stimulation for the heart meridian, the lung meridians also, there's these lines that get connected. Is this right? That's right. Yes. That's right. It depends on who you study with. Some lamas, some gurus will say the pinky's a little more closed and it's just this finger that's open. Some will say both. It really depends on the lineage. They're both fine, and that's what I learned is this Vajra fist. It's used a lot in the Tibetan yogas. Yeah. My one more question is, like, just like you mentioned about your gurus, like when you are in anxiety or you're nervous, you practice this, and it helps us. However, what about the surrounding? Like if the surrounding is quite disturbed, or it is disturbing you per se. So at that time as well, in order to control the experience outside body,
So that time also this helps us to cool down or not get affected by any kind of Yeah. noise or any disturbance, a mental as well, and a physical outside world. Does that help? Yes, because there's the inner and the outer are mirrors of each other. Yeah. So if you can calm your energy down and live more in the central channel, right? When you're more calm and central, then the outer world can be very chaotic, but it doesn't bother you as much. So yes, I think that's a very good question. And yes, absolutely. Now, I'm not going to promise that your breathing will stop a storm or a hurricane or, a war, but at least the way that you feel in relationship to the world will definitely change. Yeah, and then if you're calm, then other people get calm, right? When you're calm, then other people around you are more likely to feel calm. Correct, ma'am. And while imagining those colors which we are exhaling, and then the demons beneath the ground, they are taking it as a nectar. I could actually imagine a beast kind of faces, the dark faces, and maybe from some Hollywood movies I might have seen those kind of creatures. But I could imagine that they are hungry and they are looking upwards, opening their mouths, and they are not good looking. They are quite dangerous, and it's like some kind of a creature who's making noise. Like, yes, I want to eat it. I want to eat it, and then I'm feeding them my breath. Very good. So, Very good. Thank this you. Yes. experience, I had this experience just now while doing it, and I really got a little scared. Like, what is beneath me? Are they really there on the No, floor? they're not really there. Don't worry. Don't take it literally. This is your imagination. It's purifying your own perception, but don't get too frightened by it. It's okay. It's But a very that's the subtle concept, right? That's how the actual thing is. That's the concept, that we are feeding those emotions, both the emotions from the left and right, as a nectar to them, so that their hunger is satisfied. That's right. All right. Yeah, good. Okay, so I'm seeing that people want. You're welcome. You're welcome. I'm seeing that people want to keep going. Should we do the next person? Yeah, and then so we have just three more questions. We'll keep it brief. Okay, everybody, please just ask a concise question, and I will answer concisely. We're going to then do the practice again, and then we'll meditate. Morning. Good morning. Okay, my question is, there are 9 breaths. Okay. So first central breath, how many times, and left and right, how many times? Left and right, 3 times each side. So that makes 6. Okay. But the center is a little confusing because really it's just one breath chopped or cut into 3 parts. So I inhale a big breath, then I exhale a third, another third, and then last third. And that makes 3. I don't know why. Last 3 central breath, and first 1 breath, first time central breath. I'm sorry, I didn't understand. Okay, मेरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट में 3 20 में से लेना है, तो पहले एक 20 में से लेना है क्या? नहीं, स्टार्ट करना है हाँ. तो भी पहले 20 में से लेना है क्या एक ब्रेथ? नहीं, वो आपको विजुलाइज करना है. आपको लेफ्ट से चालू करना है, राइट लेफ्ट, ये 3 बार करना है. तो 3 इस साइड हो गया, 3 इस साइड हो गया, तो 6 हो गया. बचे 3, क्योंकि दिस इज 9 ब्रीदिंग टेक्निक्स. बचे 3 में जब हम इनहेल वापस करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, तो 3 सांसों में छोड़ना है. 1 2 3, तो ये हो गया 3. तो पहले हो गया 6, अभी हो गया 3, हो गया 9. ओके, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना है. यस, लेफ्ट से स्टार्ट. ओके, थैंक यू. Yes. Okay, last question, then we're going to do it again so we can get back into our meditation. Yes. And then we'll keep going. Yes. One more question. Good morning.
Good morning. To ask, when we make the fist like this and we are planting this, these things are open, these fingers will be open. A little bit. A Yes. little bit. We will move completely, or we should open. It's just like this. You're just putting. जब हम रख रहे हैं उसको नीचे रख रहे हैं हिप्स पे, तो उसको ओपन ही रखना है या फिर उसको हम फोल्ड करेंगे? उसको ऐसे ही ओपन रखना है, ऐसे ही पोजीशन में रखना है, या ऐसे ही रखना है? यस यस यस, यही कंफ्यूजन था कि इसको ओपन ही ऐसे ही रखना है. थैंक यू. Thank you. I like it. You want me to take one more or maybe? Okay, Kiran, real quick question. That's the last one. I'm just last question. Like when we are keeping this here like this, okay? So these fingers touch each other. Is that okay? Like this. This one. No, they're not touching like that. I mean, they can, but they're not supposed to. They're not supposed to. Yeah. Then we can fold a little bit. Like this. So not close, but more right on top of the hip. Here. Yeah. Yeah. Is that correct? Yeah. Okay. Thank you. You might. Thank you. Okay, good. I appreciate all of you. And let's save our questions to the end. We'll try to make time for more questions at the very, very end. So if you have a question, write it down or remember it, and we'll try to come back at the end. हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन लास्ट में लेंगे. We'll now continue with the practices and meditation. And please know we can't get everything all at once, right? We have to learn in stages. So be relaxed. We have one more class after this. So let's try to remain calm. Okay. All right, so do you want to share the sadhana today? That has been shared on the respective WhatsApp groups. So the copies, they have it already. But we have to practice it. Because if we want to, we can share it as a screen share and people can follow along. Is that something you can do? Yeah, I'll just, I think we should start it so that you don't waste time, and then I will try sharing it. Okay, okay. Okay, so go ahead and take a comfortable position. We'll do the 9 purification breaths again, and you'll see it actually goes really quick when you just do it. And then I'll guide the meditation. Then we'll do the Tata meditation after that. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Place. Exhale through the right nostril. Inhale, rainbow light, filling your body. Circle once, place, exhale. Good, release. Inhale, left side. Rainbow body, rainbow light, filling your body. Exhale, a little clearer. Inhale, rainbow light, filling your body. Exhale. Release.
Exhale. Release. Inhale, rainbow light. Exhale. Now we do the center, both hands at the hips. Inhale. 3-part exhalation, central channel. Then inhale, exhale, place the hands on the thighs. Relax the shoulders. Relax the belly. Breathe naturally. If you want to look at the picture of Tata to remember what she looks like, I've shared my screen. Tata Kadiravani is the emerald green color, body of light. Imagine that Tata appears in the space above you. In front of you, gazing upon you with a loving expression. कल्पना कीजिए कि अपने आगे और ऊपर की तरफ चमकदार जगह से देवी तारा आपके सामने प्रकट हो रही है। देवी तारा शांतपूर्ण है और उनका रंग पन्ना जैसा चमकीला हरा है। Your eyes can be closed or open as you like, but now we're entering into the main meditation for Tata. अपनी सुविधा के अनुसार आँख खुली या बंद रख सकते हैं। अभी मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। She is peaceful and emerald green in color, and she is seated on a moon disk atop a lotus flower, surrounded by other numerous wisdom beings, the Jnana Sattvas. She and all the wisdom beings appear radiant yet empty, like rainbows in the sky. देवी तारा शांतिपूर्ण है और उनका रंग पन्ना जैसा चमकीला हरा है। वो चांद की डिस्क यानी चक्र पर विराजमान है, एक कमल के फूल के ऊपर। यह कमल का फूल कई ज्ञान प्राणियों से घिरा हुआ है। आकाश में इंद्रधनुष की तरह देवी हरि तारा और सभी ज्ञानी प्राणी दीप्तिमान, प्रकाशिल है, फिर भी उनमें शून्यता है। Her left hand is in a 3 jewels mudra at her heart, holds the stem of the blue lotus flower, the Utpala, which rests above her left shoulder. Upon the lotus is the 8-spoked wheel of Dharma. Her right hand is placed on her right knee and faces upwards, palm open, in the mudra of supreme generosity. देवी तारा का बायां हाथ उनके हृदय चक्र के पास है और 3 रत्न मुद्रा में है। 3 रत्न मुद्रा बनाने के लिए आपको अंगूठा और आपकी रिंग फिंगर को जोड़ना है।
और उन्होंने एक नीले कमल का तना यानी स्टेम पकड़ा हुआ है, जो उनके ये कमल का फूल उनके बाएं कंधे के ऊपर है। नीले कमल के फूल के ऊपर अष्टमुखी धर्म चक्र है। देवी तारा का दाहिना हाथ उनके दाहिने घुटने पर है और हथेली खुली हुई है ऊपर की ओर। यह एक मुद्रा का प्रतीक है। वह है सर्वोच्च उदारता यानी सुप्रीम जेनरोसिटी। With her limitless compassion, she protects beings from adverse circumstances and the 8 great dangers, each of which has an inner and outer aspect. The elephant of ignorance, the fire of anger, the lion of arrogant pride, the water of clinging, the snake of jealousy, the thief of false views, the demons of doubt, and the imprisonment of greed. अपनी असीम करुणा के साथ देवी तारा हमें प्रतिकूल परिस्थितियों और 8 महान खतरों से प्राणियों की रक्षा करती है, जिनमें प्रत्येक का आंतरिक और बाहरी पहलू है। ये 8 महान खतरे कौन से हैं? अज्ञान का हाथी, क्रोध की आग, शेर का अत्यधिक अभिमान, मोहमाया का सागर, ईर्ष्या से भरा सांप, झूठे विचारों का चोर, संदेह के राक्षस और लालच का पिंजरा। So now in her presence, we will recite a prayer of refuge and bodhicitta. अभी हम शरण और बोधिचित्त प्रार्थना का पाठ करेंगे। Bring your hands together in prayer. अपने हाथों को जोड़ दीजिए। So I'll recite it once in English and then Sweety will take you through 3 times in Hindi for the sake of time. Okay. यह प्रार्थना Go ahead. Sorry. यह प्रार्थना का जाप हम 3 बार करना है, तो 3 बार करेंगे। Namo, noble Tata, you who liberates beings from fear and suffering are the essence of all refuges. I take refuge in your vast loving compassion. In order to place all mother sentient beings in the state of enlightenment, I generate the 2-fold bodhicitta of aspiration and application. Now 3 times in Hindi. नमो महान तारा, आप जो प्राणियों को भय और दुखों से मुक्त करती है, सभी आश्रयों का सार है। मैं आपकी विशाल प्रेममय और करुणा में शरण लेती हूँ। सभी मात्र सत्वों को ज्ञानोदय की स्थिति में रखने के लिए मैं अभीप्सा और अनुप्रयोग के दिव्यगुणित बोधिचित्त उत्पन्न करती हूँ। नमो महान तारा, आप जो प्राणियों को भय और दुखों से मुक्त करती है, सभी आश्रयों का सार है। मैं आपकी विशाल प्रेममय और करुणा में शरण लेती हूँ। सभी मात्र सत्वों को ज्ञानोदय की स्थिति में रखने के लिए मैं अभीप्सा और अनुप्रयोग के दिव्यगुणित बोधिचित्त उत्पन्न करती हूँ। नमो महान तारा, आप जो प्राणियों को भय और दुखों से मुक्त करती है, सभी आश्रयों का सार है। मैं आपकी विशाल प्रेममय और करुणा में शरण लेती हूँ। सभी मात्र सत्वों को ज्ञानोदय की स्थिति में रखने के लिए मैं अभीप्सा और अनुप्रयोग के दिव्यगुणित बोधिचित्त उत्पन्न करती हूँ। And now we sound her seed syllable thum together. With the first thum,
manifest yourself as Tata Sengdeng Nak Kadiravani. She's emerald green in color, peaceful and luminous. You are seated on a full moon disc upon an emerald green lotus flower. And your right leg is extended slightly, stepping down to help beings in samsara. Your left leg is close to your body, symbolizing resting in nirvana. ध्वनि देवी तारा का बीज शब्दांश तम का उच्चारण अभी हम 3 बार करेंगे। जब पहले तम का उच्चारण करेंगे तो हमें क्या कल्पना करेंगे? अपने आप को तारा, देवी तारा के रूप में प्रकट करें, हरे रंग में, शांतिपूर्ण और चमकदार। आप एक हरे कमल के फूल पर चांद की डिस्क पर बैठे हैं। आपका राइट लेग यानी दाहिना पैर का स्थान थोड़ा सा बाहर की तरफ नीचे उतरते हुए है, जिसका प्रतीक है कि संसार में प्राणियों की मदद करने के लिए आप देवी तारा की जैसे तैयार है। आपका लेफ्ट लेग यानी बायां पैर आपके शरीर के करीब है, निर्वाण में विश्राम का प्रतीक है। So you can take this posture if you want that you see in the statue. The right leg forward, the left leg close. आप आंखें खोल के आप ये पोजीशन देख सकते हैं और ये पोजीशन ले सकते हैं देवी तारा के रूप में। Or you can just imagine. या तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। The mudras are a little easier, so everyone can do. The left hand is in the mudra of the 3 jewels, with the thumb and the ring fingers touching. This is called the 3 jewels mudra, and it holds the stem of the blue lotus flower, which rests above your left shoulder. Upon the lotus is the 8-spoked wheel of Dharma, emitting wisdom rainbow light rays in all directions. And then your right hand is resting on your right knee with an open upward facing palm in the mudra of supreme generosity. आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ 3 रत्न मुद्रा में है। जब आपको 3 रत्न मुद्रा लेना रहेगा तो आपको आपके रिंग फिंगर और अंगूठा को साथ मिलाना है। सो आपका लेफ्ट हैंड बायां हाथ 3 रत्न मुद्रा में है, नीले कमल के फूल के तने को पकड़े हुए हैं जो आपके बाएं कंधे के ऊपर है। नीले कमल पर धर्म का अष्टमुखी चक्र है जो सभी दिशाओं में ज्ञान के प्रकाश की किरणें फैला रहा है। आपका दाहिना हाथ आपके दाहिने घुटने पर है, आपकी हथेली खुली हुई है ऊपर की ओर। इस मुद्रा का प्रतीक है सर्वोच्च उदारता। And now imagine in your heart chakra is an emerald green seed syllable Tam, T-A-M, which sits atop a little moon disk within a sphere of emerald green light. अभी कल्पना कीजिए आपके हृदय चक्र में हरा रंग का बीज अक्षर तम है जो चंद्रमा की डिस्क के ऊपर बैठा है। तम और डिस्क दोनों भी हरे रंग के प्रकाश के क्षेत्र के भीतर है। We inhale together and then as we exhale we say Tam. We become Tata. जैसे हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर करते हैं, when we exhale, तो हमें पहले तम का उच्चारण करना है। जैसे पहले तम का उच्चारण करना है, खुद को देवी तारा के रूप में प्रकट करना है।
Inhale, get ready. Exhale. Dum. Say Tam a second time, and as Tata Kadiravani, imagine that you send rainbow light from the emerald green thumb at your heart, making offerings of light to all the Tatas, all the wisdom beings in the space above you. जब हम तम ध्वनि तम का उच्चारण दूसरी बार करेंगे तो हमें क्या कल्पना करनी है? हरि देवी तारा के रूप में कल्पना कीजिए कि आप हृदय चक्र में हरे रंग के तम से इंद्रधनुषी प्रकाश प्रसाद के रूप में सभी देवी तारा और ज्ञान प्राणियों को आपके ऊपर के स्थान पे समर्पित कर रहे हैं। Inhale. We sound thumb for a third and final time. As we sound thumb, we imagine that with the wisdom beings, the Tatas, the Buddhas, the Devas, Devatas, Devis, everyone, joyfully sends rainbow wisdom light back to you, blessing and empowering you as Tata. And you become fully activated as the luminous emerald green Tara Kadiravani. अभी हम तम का ध्वनि तम का जब तीसरी बार उच्चारण करेंगे तब हमें क्या कल्पना करनी है? ज्ञानी प्राणी खुशी खुशी आपके पास इंद्रधनुषी ज्ञान के प्रकाश को भेज रहे हैं, आपको आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करते हैं और इसी के साथ आप चमकीली हरे देवी तारा के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। Inhale. Let any doubt or hesitation, disbelief that you are Tata wash away and take your seat like a queen on a throne as Tata. Can you translate, Sweety? Sorry, can you repeat it? Sorry. Let any fear or doubt or hesitation wash away and take your seat as Tata, like a queen sitting on her throne. अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं, कुछ हिचकिचाहट हो रही है, उनको सबको साइड में रखते हुए अपने आप को देवी तारा के रूप में इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप उनके थ्रोन पे विराजमान हैं, जस्ट लाइक देवी तारा. And now we sound Tam for a third and final time. As we sound Tam, we imagine that with the wisdom beings, the Tatas, the Buddhas, the Devas, Devatas, everyone, joyfully sends rainbow wisdom light back to you, blessing and empowering you as Tata. And you become fully activated as the luminous emerald green Tara Kadiravani. अभी हम तम का ध्वनि तम का जब तीसरी बार उच्चारण करेंगे तब हमें क्या कल्पना करनी है? ज्ञानी प्राणी खुशी खुशी आपके पास इंद्रधनुषी ज्ञान के प्रकाश को भेज रहे हैं, आपको आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करते हैं और इसी के साथ आप चमकीली हरे देवी तारा के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं.
Mantra Recitation. As you recite the mantra, imagine that it circles counterclockwise around the thumb in your heart. The mantra stands vertically around the edge of the moon disk and faces outwards. The thumb and the mantra at your heart emanate rainbow light in all directions. This light and the turbulent wisdom light emanating from the Dharma wheel, free beings from adverse circumstances and the 8 great fears. Through the rays of wisdom light, see all beings become free from suffering as they awaken to their true nature. The light and sound of the mantra are expressions of Tara's love and compassion for all beings without exception. अभी जब हम मंत्र का पाठ करेंगे, जैसे ही आप मंत्र पढ़ते हैं, कल्पना करनी है कि आपके हृदय में तम के चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में यह मंत्र चक्कर लगा रहा है। मंत्र चंद्रमा की डिस्क के किनारे के चारों ओर लंबवत यानी वर्टिकल खड़ा है। इट्स फेसिंग आउटवर्ड्स यानी मंत्र बाहर की ओर अनुमुख है। आपके हृदय चक्र में स्थित तम और मंत्र सभी दिशाओं में इंद्रधनुषी प्रकाश फैला रहा है। ये इंद्रधनुषी प्रकाश और धर्म चक्र से निकलने वाला ज्ञान प्रकाश हमें प्रतिकूल परिस्थितियों और 8 मान भयों से रक्षा करते हैं और सभी ज्ञानी प्राणी इनसे मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान प्रकाश की किरणों के माध्यम से देखें कि सभी प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होते ही अपने सभी दुखों पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। सारे प्राणियों के लिए मंत्र का प्रकाश और ध्वनि देवी तारा के प्रेम और करुणा की अभिव्यक्त है। Now we'll recite the mantra together 21 times out loud, and then we'll continue more quietly. अभी हम मंत्र का उच्चारण कम से कम 21 बार करेंगे। Om Tare Ture Danatraya Swaha. 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 Om Tare
Tare ture Danatraya Swaha. Om 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 Tare ture Danatraya Swaha. I put the chat mantra in the chat if you need it. Om Tare ture Danatraya Swaha. Om Tare ture Danatraya Swaha. Now we recite more like the buzzing of the bees, the quiet. Om Tare ture Danatraya Swaha. Om Tare ture Danatraya Swaha. Om
Ritutariture Dana Traya Svaha. And imagine that Tara's rainbow light is like a blanket of blessings surrounding the entire planet and beyond. And now we do the dissolution. After reciting the mantra, imagine the universe and all its inhabitants dissolve into light. And that light dissolves into you as Tata Sengdengnak or Kadiravani. And then you dissolve into light from the crown of your head and the soles of your feet, slowly converging at the heart center and dissolving into the emerald green sphere containing the moon disk, mantra, and seed syllable. And then this sphere and all its contents dissolve into the thumb. And finally, the thumb dissolves from the base to the top, which dissolves into luminous emptiness. So, sweetie, when you read this, read it very slowly so people can do the visualization slower than what I did, okay? Step by step. Dissolution, Wington, मंत्र का जाप करके कल्पना करें कि ब्रह्मांड और उनके निवासी प्रकाश में डिसॉल्व यानी विलीन हो रहे हैं और वो प्रकाश आप में देवी तारा के रूप में विलीन हो रहे हैं। आप संपूर्ण रूप से आपके सिर का मुकुट और आपके पैरों के तल हृदय चक्र में चंद्रमा की डिस्क, मंत्र और बीज शब्द, ये सब हरे रंग के गोले में विलीन हो जाते हैं। तब ये हरा रंग का गोला और इसकी सभी सामग्री तम में विलीन हो जाती है। अंत में तम पूरी तरह से लुमिनस एम्प्टीनेस यानी चमकदार शून्यता में विलीन हो जाता है। Rest in spacious awareness as long as you like, free of fabrications, free of distraction. Just rest in meditation now. जब तक आप चाहे विशाल जागृता में विश्राम करें, मनगढ़ंत विचारों और व्याकुलता से मुक्त सिर्फ विश्राम करें। Has thoughts of distraction, release with the exhalation, and come back to the present moment. जब अनावश्यक विचार शुरू हो तो उन्हें सांस बाहर लेते समय उन्हें रिलीज कीजिए और अभी के मोमेंट में आ जाइए।
return to our form, not our normal form, but our Tara Kadira Vani form, and feel ourselves as her, luminous, powerful, and fully integrated. And as much as you can, continue this visualization as you rise from your meditation seat and go about your day. जब अनावश्यक विचार शुरू हो तो खुद को हरि देवी तारा के रूप में लौट आए और महसूस करें अपने आप को उनके रूप में चमकदार, शक्तिशाली और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत। इस विजुअलाइजेशन को जारी रखते हुए अपने ध्यान में रहिए। Now we'll say the dedication of merit prayer together out loud. I'll say it in English once and Sweety will guide you in the Hindi. अभी हम गुण के संपन्न का पाठ करेंगे। Through this virtue, may I quickly attain the state of noble Tata. May I bring each and every being without exception to that state. And may all beings be healthy, free from suffering and its causes, and may they awaken to their true nature. इस गुण के माध्यम से मैं शीघ्र ही मान तारा की स्थिति प्राप्त कर लेती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी प्राणी स्वस्थ रहें, कष्टों से मुक्त हो और वे अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हो जाए। Thank you. Thank you. So what I'd like to do now is take a little break so you can use the bathroom. You need to get some water or tea. And then when we come back, I will guide you in a more of a personal journey with Tata. And so let's take a 5-minute break. Okay? अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम जर्नी ऑफ गॉडेस तारा यानी गॉडेस तारा के साथ यात्रा करेंगे। सो हम सब 5 मिनट के बाद मिलेंगे। 5 मिनट्स।
so let's come back. So now I'm going to guide you on a journey that is a process that was developed by my teacher, Lama Tsoltrim. And people really love doing this. It's more of a personal process, or like a modern emotional process that helps us feel more connected to Tata. You're muted, Sweety. Do you want me to say that again? Okay. So this journey with Tata is a process that was developed by my teacher, Lama Tsoltrim. ये जो हम अभी देवी तारा के साथ यात्रा करेंगे, ये जर्नी को लिखा है उन देवी टीचर चंद्रा ईस्टन के गुरुजी ने, जो है लामा सुल्त्री. The practice we just did is more traditional. Okay. जो हमने अभी प्रैक्टिस की थी वो ज्यादा ट्रेडिशनल है. Now this journey is a bit more modern. अभी जो हम देवी तारा के साथ यात्रा करेंगे वो थोड़ा सा और मॉडर्न है compared to what the practice that we did. You will have a chance, an opportunity to ask Tata some questions and then become Tata and answer as Tata. जब हम ये देवी तारा के साथ यात्रा करेंगे तो हम देवी तारा को हमारे जीवन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, वो हम उन्हें प्रश्न पूछेंगे. फिर खुद ही देवी तारा के रूप में प्रकट होके हमें खुद उनको आंसर्स देना है. So I want you to have an empty seat in front of you, because you are going to take that seat and become Tata. So you'll have your seat and then some empty space in front of you so that you can switch positions. So for example, I'll show you. So maybe I start like over here, and then I have an empty cushion, and then when I say switch places, you keep your eyes closed and you'll switch positions and become Tata. Okay. Then you're going to switch back and become your normal self again. Okay. तो जब हम ये यात्रा शुरू करेंगे, ध्यान रखें कि अपने आगे की जगह या अपने आसपास की जगह खुली हो, क्योंकि हम आंखें बंद रख के ये यात्रा करेंगे. हम जब प्रश्न पूछेंगे हम खुद स्वयं होके देवी तारा को, उसके बाद हमको देवी तारा की सीट पे जाना है, देवी तारा के रूप में उन प्रश्नों का उत्तर देना है और वापस खुद अपनी जगह पे आना है. इसके लिए हो सकता है तो आसपास, प्लीज आसपास अपने सामने की ओर एक जगह खाली रख दीजिए. If you don't have space, you can also just stand up and become Tata. You can stand up. You don't have to sit down. अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप खड़े होके देवी तारा का रूप ले सकते हैं. Okay. So I will guide you through the whole thing. You don't have to remember any of that. आप खाली प्रोसेस को एंजॉय कीजिए आंखें बंद करके. हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप. Yeah. Okay. So now close your eyes. आंखें बंद कीजिए. And keep them closed as much as possible until the end of the process. जितना हो सके उतना आंखें बंद रखिए और एंड प्रोसेस के एंड तक आंखें बंद रखिए. And we'll take some relaxation breaths. Just breathe into your belly and release tension with the out breath. अभी हम रिलैक्सेशन ब्रेथ्स लेंगे. जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल. सांस अंदर ले और सांस को बाहर छोड़.
then create your motivation to practice for the benefit of yourself and all beings. This is called raising Bodhichitta. अपने और सभी प्राणियों के लाभ के लिए यह अभ्यास करने की प्रेरणा उत्पन्न करें। इसे बोधिचित्त बढ़ाना कहा जाता है। And now our first step, call on the Tata with whom you'd like to work with. So today we'll work with the 9th Tata, Kadiravani. So bring her into the space in front of you again. See her, feel her presence. Step 1 यानी चरण 1 में देवी तारा, ग्रीन तारा की उपस्थिति का आह्वान करें, जिनके साथ आप यह यात्रा करना चाहेंगे। And we'll sound the seed syllable tam once, and we'll see her appearing in front of us, just like we did in the practice. देवी तारा को पुकारे, जिनके साथ आप आगे संवाद करना चाहेंगे। देवी ध्वनि तारा का बीज अक्षर तम का एक बार उच्चारण करेंगे। Inhale. सांस अंदर ले, Notice the details of this Tata, her size, her emerald green color, her character. See her symbol on her Utpala flower and the look in her eyes. देवी तारा को अपने सामने, देवी तारा को अपने सामने वैसे ही रूप में देखे जैसे आप साधना करते हुए कल्पना करते हैं। ध्यान दे देवी तारा के विवरण में, उनका आकार, रंग, चरित्र, नीले कमल के फूल पर अष्टमुखी धर्म चक्र और उनकी आंखों में देखें। देवी तारा के बारे में कुछ ऐसा नोटिस करें जो आपने पहले नहीं देखा। Notice something about this Tata that you didn't see before. देवी तारा के बारे में कुछ ऐसा नोटिस करें जो आपने पहले नहीं देखा। Notice the environment around Tata. What kind of place is she in? What is the feeling in the environment? Is she in a place you've been? Can you see the time period? Can you see the country she is in? Do you notice any smells or sounds? And is she on this earth or in another dimension? And if it is another dimension, notice the details of that place. So you can read that more slowly than I did, Sweety. Okay? अब देवी तारा के आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। वह किस तरह की जगह पर है? आप वातावरण में क्या महसूस कर रहे हो? क्या देवी तारा उस जगह पर है जहां आप पहले गए हो? क्या आप समय अवधि देख सकते हैं?
क्या आप उस देश को देख सकते हैं जिसमें देवी तारा है? क्या आप कोई सुगंध महसूस कर सकते हैं या कोई आवाज सुनाई देती है? क्या देवी तारा इस पृथ्वी पर है या अन्य डायमेंशंस यानी आयाम में? यदि देवी दूसरे आयाम में है तो उस स्थान के विवरण पर ध्यान दें, नोटिस करें। Step 2. Now imagine that Tata takes you on a journey to a special place. चरण 2 यानी स्टेप 2, देवी तारा आपको एक यात्रा पर ले जाती है, आपको एक स्पेशल जगह पर ले जाती है। And you follow, walking behind her. Notice what the path is like and how it changes as you proceed. Do you notice any smells or sounds? And what is the feeling in the environment? अब कल्पना कीजिए कि देवी तारा आपको एक खास जगह की यात्रा पर ले जाती है। आप उनके पीछे चलते हैं। ध्यान दें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पथ कैसा है और यह पथ कैसे बदलता है। क्या आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है या आवाज सुनाई देती है? आप वातावरण में क्या महसूस कर रहे हो? When you arrive at that special place Tara is taking you, notice where it is. जब आप उस विशेष स्थान पर पहुंचते हैं जहां देवी तारा आपको ले जा रही है, तो ध्यान दें कि वह जगह कौन सी है। What are the qualities of the place that surrounds you? What time of day is it? What is the temperature? Maybe you should translate now. आपके आसपास के स्थान के क्या गुण हैं? यह दिन का कौन सा समय है? क्या है तापमान उस जगह का? Are there any particular smells? क्या कोई विशेष सुगंध है? What era is it? यह कौन सा युग है?
how do you feel in this place? आपको इस स्थान पे कैसा लग रहा है? Does it remind you of anywhere you've been before? क्या यह स्थान आपको याद दिलाता है कि आप पहले कभी आए हो? And now Tata explains why she has brought you here and why this place is important to you. अब देवी तारा बताती है कि वह आपको यहाँ क्यों लाई है और यह जगह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। Step 3. Now in this place, ask Tata any questions you have concerning the dynamic you would like to work with. Maybe it's around challenges you have embodying this Tara, her energy, her enlightened activity. You can ask one or several questions. स्टेप 3, अब तीसरे चरण में देवी तारा से अपने प्रश्न पूछे। अब इस स्थान पर देवी तारा से कोई भी विषय में प्रश्न पूछे जो आपके गतिशील होने के संबंध में हो, जिस पर आप काम करना चाहते हो। जीवन में देवी तारा की ऊर्जा और प्रभुत्व अवतार लेने में आपको चुनौतियां हो सकती हैं। इस संबंध में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप एक या कई प्रश्न पूछ सकते हैं। So I'll give you about 5 minutes and you can go at your own pace. You can go at your own speed. Okay, sweetie? They can ask a question and they can say it out loud. Like, what should I do tomorrow? And then switch positions. Become Tata and answer that question as Tata, out loud or quietly. अभी आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। आप देवी तारा को प्रश्न पूछें। ये प्रश्न आप जोर से भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद आप देवी तारा की सीट पे आए और देवी तारा का रूप लेते ही उस प्रश्न का जवाब दें। If you want to journal the questions and answers, you can do that too. अगर आपको ये लिखित करना है, जहाँ पे आप ये प्रश्न
पूछ सकते हैं, और जो आंसर मिलता है उसको आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं. So I'll guide you through the first round and then I'll let you do a few more on your own. So think of a question that you want to ask Tata. एक प्रश्न के बारे में विचार करें जो आपको देवी तारा को पूछना है. Then ask it out loud. आप जोर से प्रश्न को या प्रश्न का उच्चारण कर सकते हैं. And then slowly, with your eyes closed, switch positions and become Tata. आंखें बंद करते हुए अभी देवी तारा के सीट पे आ जाए और देवी तारा के रूप में प्रकट हो जाए. Feel what it's like to be in Tara's body. ध्यान दे कि देवी तारा के शरीर में आपको कैसा महसूस हो रहा है. And notice what your normal self looks like from Tara's point of view. देवी तारा के दृष्टिकोण से आपका सामान्य स्वरूप कैसा लग रहा है. After settling into Tara's body, answer the questions speaking as Tara. देवी तारा के शरीर में बसने के बाद प्रश्न का उत्तर दे. देवी तारा के रूप में इन प्रश्नों का उत्तर दे. And whenever you're ready, you can switch back to your original seat, eyes closed. And if you have more questions, you can ask one or two more questions in your own time now. Switching and becoming Tata and so on, just like you did. आप चाहे जितना प्रश्न पूछ सकते हैं और देवी तारा के रूप में उन्हें उत्तर दे सकते हैं. आपकी सुविधा के अनुसार आप आपकी सीट पर लौट सकते हैं.
So now starting to finish up. If you're not already finished, returning to your original position. समाप्त करते ही आप अपनी सीट पर लौट आए। Take a moment now from your original seat to feel Tara in front of you again and feel her protection that Tara has offered you. समाप्त करते ही अपनी सीट पर लौट आए, कुछ समय निकाले, सहायता और सुरक्षा जो देवी तारा ने आपको दी है उन्हें महसूस करें, विश्राम करें। Can you tell people to not chat? I want them to stay in the meditation here because we're not done yet. Please don't chat. चैट बॉक्स पे कुछ भी मैसेजेस न डालें क्योंकि मेडिटेशन प्रोसेस ऑनगोइंग है। Seeing Tara in front of you now, you see that now she turns away. And when she turns back, she is holding a gift for you. अभी देवी तारा को आपके सामने देखें। जैसे आप देवी तारा को देखते हैं, वो दूर हो जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है, तो आपके लिए एक उपहार रखती है। And Tara gives you the gift. You hold it and notice the details of the gift. And Tara explains its meaning to you. देवी तारा आपको उपहार गिफ्ट देती है। आप इस उपहार को धारण करते हैं और उसके विवरण, उसके डिटेल्स को नोटिस करते हैं। देवी तारा यह उपहार के अर्थ की व्याख्या करती है। And then the gift, with all its potency, dissolves into your heart, and notice the feeling of the gift inside you. कल्पना कीजिए कि उपहार की सारी शक्ति आपके हृदय में घुल जाती है। आप अपने अंदर उपहार की भावना को महसूस करें। And now see Tara in front of you. Look into her eyes and feel her energy pouring into your body. As you feel the energy of Tara entering you, it spreads all the way down to the soles of your feet, to your fingertips, and throughout your whole body. अब अपने सामने देवी तारा को देखें, उनकी आंखों में देखें और महसूस करें देवी तारा की ऊर्जा को। आपके तन में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही आप महसूस करते हैं
कि देवी तारा की ऊर्जा आप में प्रवेश हो रही है सभी तरह से, नीचे के तलवों तक वो फैल जाती है। ये ऊर्जा आपके पैर, आपकी उंगलियां और आपके पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। And now imagine that Tata dissolves into light, and notice the color of this light. Feel the light dissolving into you, integrating this luminosity into every cell of your body. And take note of the feeling of the integrated energy of Tata in your body. अब कल्पना कीजिए कि देवी तारा प्रकाश में विलीन हो जाती है, यानी डिसॉल्व हो जाती है। इस प्रकाश के रंग पर ध्यान दें और महसूस करें। यह प्रकाश आप में घुलते हुए इस चमक को आपके शरीर की हर कोशिका में इंटीग्रेट यानी एकीकृत करें। आप अपने शरीर में देवी तारा की एकीकृत ऊर्जा को महसूस करें। And now you, with the integrated energy of Tata, also dissolve into space. अभी आप देवी तारा की एकीकृत ऊर्जा के साथ स्वयं खुद विलीन हो जाते हैं। And the step 6, rest in the state that is present after the dissolution. Just rest. स्टेप 6, चरण 6, जागृतता में विश्राम। विलीन होने के बाद जो स्थिति है उसमें विश्राम करें, बस विश्राम करें। We'll just spend a couple minutes in this spacious state of mind. And then when thoughts naturally begin to come again, we know that's a sign to gradually come back to your body, to recalling the feeling of Tara's energy in the body.
जब तक अनावश्यक विचार शुरू न हो जाए तब तक आप विश्राम करें। अपने शरीर में देवी तारा की ऊर्जा की भावना को याद करते हुए अब As you open your eyes, maintain the feeling of Tara's energy in your body and see the world through the eyes of Tara. अब धीरे धीरे वापस अपने शरीर में आए। अब जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, अपने शरीर में देवी तारा की ऊर्जा की भावना को बनाए रखें और दुनिया को देवी तारा की नजर से देखें। And now we dedicate the merit of our practice, the accumulation of positive energy that you've generated through this transformation to the benefit of all beings everywhere. अभी हम गुण का समर्पण करेंगे। गुणों को समर्पित करें। आपने इस ध्यान के माध्यम से परिवर्तन करके जो पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचय उत्पन्न किया है, इस ऊर्जा को दुनिया के सभी प्राणियों के लाभ के लिए समर्पण करें। And now post meditation, as you go about the rest of your day, imagine that you are Tata and that everyone you meet is a manifestation of your mandala or your kula, you could say, right? Your community. As you eat, you're feeding Tata. As you dress, you're dressing Tata. Imagine that the world is transformed into a luminous dimension, and this is called pure perception. So try to maintain that as you go about your day. ध्यान के बाद जैसे ही आप अपने बाकी के दिन की शुरुआत करते हैं, कल्पना करें कि आप देवी तारा हैं और आप जिस किसी से मिलते हैं वो आपके मंडला की अभिनय हैं। आप खाते ही देवी तारा को खिला रहे हो। जैसे आप कपड़े पहनते हो, आप देवी तारा को तैयार कर रहे हो। कल्पना कीजिए कि दुनिया एक चमकदार आयाम में बदल गई है। इसे कहते हैं शुद्ध अनुभूति, प्योर परसेप्शन। Thank you. So we are at time, and I can't stay past our designated time today. I have family obligations. I know I said I would do questions, so please forgive me. Tata wanted to go on a long journey today. And maybe she already answered all your questions. You can translate that. समय की अवधि देखते हुए आज हम क्वेश्चन आंसर का सेशंस नहीं लेंगे। आज देवी टीचर चंद्रा ईस्टन को भी दूसरे कमिटमेंट्स है, सो होपफुली हमें आपके जितने क्वेश्चंस है हम कल ले लेंगे। We'll take it tomorrow. Take it tomorrow, exactly. So write them down in your journal if you have questions. I'm sorry. If you have questions for the team, the Devi Circle team, they can help you with anything technical. I think, Sweety, we are making the PDFs of the practice, the journey, the 9 purification breaths. All of that is accessible for people, right? Yes. Can you explain to them how, maybe explain again how they'll get those? Yes. जैसे कि हमने कल व्हाट्सएप ग्रुप पे कंसाइज साधना और ब्रीदिंग प्रैक्टिस शेयर किया था, आज वही व्हाट्सएप ग्रुप पे वापस ये 2 पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा, प्लस जर्नी विद गॉडेस तारा जो हमने आज सीखा है वो भी शेयर हो जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ओपन करोगे, पहले आप इंग्लिश देखोगे, फिर बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है। And I want to hear about your journey with Tata when we come back together tomorrow. I'm so curious
to hear where she took you, what was her gift for you. So if you want to share that tomorrow, you can do that. कल हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे कि आज आपने जर्नी जो किया, यात्रा जो किया है देवी तारा के साथ, कैसा महसूस हुआ है, आपको क्या उपहार में मिला है. सो वो बारे में कल हम एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे. Okay, thank you everyone. Thank you so Have much. a wonderful day. Thank you.